Today we are to continue. Okay, beta. We are to continue redox. We were trying to find out oxidation state. We reached up to point number 4. I hope you must have read all 4 pointers that we have discussed in our last class. Redox reaction में we were continuing with how to find out the oxidation state और ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड करते हैं. अब हम पहुंचे पॉइंट नंबर 5 पे, जो कि एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है. हमने पॉइंट नंबर 1 में ये माना कि ऑल एलिमेंट्स हैव जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट. पॉइंट 2 में हमने कहा ग्रुप 1, 2, 3 मेटल्स ऑलवेज हैव फिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट इज 1 प्लस, 2 plus and 3 plus respectively without any exception and exclusion. Point number 3 में हमने माना कि non-metal belonging to group 4, 5, 6, 7 have oxidation state of 4 minus 3 minus 2 minus 1 minus with metals only. और point number 4 में हमने कहा in case of a compound of two non-metal, the one that is more electronegative will get its real charge, whereas another non-metal will get a false charge. पॉइंट नंबर 5 भी कुछ इसी बेसिस में है. इन केस ऑफ ए पॉली एटॉमिक आयन, पॉली एटॉमिक आयन के केस में, अच्छा इसको सॉल्व करने की ट्रिक है, इसके लिए पॉइंट ना बनाओ तो बेहतर है. फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव कार्बोनेट आयन दिस and examiners asking what are the oxidation state of elements which are present in this ion. So what you do, first of all, इसका चार्ज उठा के इससे दूर कर दो, यहाँ लिख दो. So it is appearing like this, isn't it? तो अब चार्ज इतना हो गया है, दूर हो गया इससे. रिमेनिंग पार्ट क्या है मेरे पास? CO3. अब इस CO3 में दोनों एलिमेंट्स को देखो कि कौन ऊपर है और कौन राइट पे है. दैट मीन्स इट विल बी डन इन द सेम वे. ये उसी तरीके से होगा जिस तरह मैंने पॉइंट नंबर 4 में किया था. इट विल बी डन इन द सेम वे. तो देखो कौन ऊपर है सर, दोनों एक ही पीरियड के अंदर है. तो फिर देखो राइट पे कौन है, राइट पे ऑक्सीजन है. ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन को रियल ऑक्सीडेशन स्टेट दे दो. एक ऑक्सीजन की रियल ऑक्सीडेशन स्टेट 2 माइनस है, तो 3 की कितनी हो जाएगी? 6 माइनस. अगर ऑक्सीजन की 6 माइनस है तो कार्बन की कितनी होनी चाहिए? 6 प्लस. इज इट डन? नो. अभी वो बात बाकी है. जो चार्ज तुमने अलग उठा के रखा है, कितना चार्ज था? 2 माइनस, डिडक्टेड आउट ऑफ द ऑपोजिट नेचर स्पीसी. अगर ये 2 माइनस है तो उसको रिमूव किस में से करना पड़ेगा? प्लस स्पीसी में. अगर मैं इसमें से इसको डिडक्ट कर दूं तो कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी रह जाएगी? 4 प्लस. तो मेरे पास ऑक्सीजन कितना रह जाएगा? 2 माइनस पर एटम. तो C is 4 plus, whereas O is 2 minus in this case. जिन्हें केस नंबर 1 नहीं समझ में आया, केस नंबर 2 देखिए गौर से. SO4 2 minus. पहला स्टेप, lift the charge and put it aside. इधर आ गया. Now it is appearing that way. कौन ऊपर है, कौन राइट पे है? तो ऑक्सीजन ऊपर है, सल्फर नीचे है. तो जब पहले ऊपर नीचे का फैसला हो जाए
या ऊपर नीचे से मुझे पता चल जाए, रियल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन को देनी पड़ेगी 8 माइनस, तो सल्फर वुड गेट 8 प्लस. What's the charge overall on the iron? Minus charge. Remove it out of plus SPC. This becomes 6 plus. And this remains 2 minus. So sulfur is 6 plus. Oxygen is 2 minus. Case number 3 देखो. MnO4 1 minus. Take the charge. Put it aside. This appears MnO4. Right? What is having a lower number of period? Oxygen, obviously. So oxygen is 8 minus. Manganese will be 8 plus. 1 minus charge था रिमूव करना पड़ेगा किसमें से? Magnesium becomes 7 plus. The oxygen remains 2 minus Mn 7 plus. Oxygen 2 minus. All right. Respond me. How many of you have understood this thing? Except for those who have joined joined very lately in the class. Is that making sense to everyone? I hope this will be an easier method for finding oxidation state within an ion. I hope so. क्या क्लास में सिर्फ 2 बच्चे हैं? I just got 2 answers. Is that a better way or easier way for finding charge on within ion? Tell me. All right. Now I'm giving you a few ions, and you have to find out the oxidation state of elements. इन चारों आयंस में तमाम एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो जल्दी से. शाबाश बच्चों. I hope you can do it. And answer me on the WhatsApp group.
शाबाश, किसी ने सेंड किया मुझे? सर मैंने ग्रुप पे सेंड कर दिया है। हम्म मेरे पास सिर्फ सुबहाना, शहीर, दुआ, सुबहाना का सिर्फ, सुबहाना सिर्फ एक ही भेजा है तुमने, बाकी तीन कौन भेजेगा? यस, दैट इज परफेक्टली राइट। शाबाश दुआ। एंड देन आई हैव, नहीं शहीर, यू हैव डन इट रॉन्ग। शाबाश मोहसिन। Because you have joined lately, you connected in the class, एक मिनट तुम्हारा टाइम बताऊं, you joined the class at 12:43. I started at 12:35, तो तुम 10 मिनट लेट आओगे तो तुम्हें कैसे क्लियर होगा? ओके भी, नाउ चार्ज उठा के दूर रख दिया, 3 माइनस, कंसिडर दिस PO4। कौन ऊपर है? ऑक्सीजन ऊपर है, फॉस्फोरस नीचे है। तीन, who's this, who's Qasim is staying on? जी, who's कासिम साहब? मोहम्मद कासिम। मोहम्मद कासिम साहब, एक मिनट रुके। who's this कासिम साहब? जी साथ समझ, प्लीज मैसेज whatever you want to say. ओके, चलिए सुनिए। तो ऑक्सीजन ऊपर है तो ऑक्सीजन को रियल चार्ज दिया 8 माइनस, तो फॉस्फोरस पे क्या चार्ज आया? 8 प्लस। व्हाट इज द ओवरऑल चार्ज ओवर इट? दैट इज 3 माइनस, रिमूव कर लीजिए, फॉस्फोरस बिकम्स 5 प्लस, ऑक्सीजन बिकम्स 2 माइनस।
सिमिलरली इसको देखें, S2O8 में से 2 माइनस को दूर कर दिया तो दिस इज अपियरिंग S2O8। सल्फर नीचे है, ऑक्सीजन ऊपर है, तो ये 16 माइनस, ये 16 प्लस। चार्ज कितना था? 2 माइनस। तो ये पहले ये चार्ज इसमें से रिमूव कर लो, कितना रह जाएगा? 14 प्लस। एंड नाउ डिवाइडेड विथ 2 बिकॉज देयर वर 2 सल्फर, सो पर एटम मेरे पास कितना आया? 7 प्लस, ऑक्सीजन रहा 2 माइनस। सिमिलरली इसको देखिए, चार्ज उठा के दूर कर लिया, सो दिस इज अपियरिंग C2O7। ऑक्सीजन ऊपर है, क्रोमियम फोर्थ पीरियड में, ऑक्सीजन सेकंड पीरियड में। 14 माइनस 14 प्लस, रिमूव कीजिए 2 माइनस चार्ज को आउट ऑफ दिस becomes 12 plus. How many chromium atoms are there? 2. This becomes 6 plus. So Cr is 6 plus, O will be 2 minus. जी शेर, पूछिए क्वेश्चन, टाइप इट। क्या ये बात सारे स्टूडेंट्स को समझ में आई है? ये जो 3 केसेस मैंने भी किए तमाम, दोज हु ऑलरेडी हैव अंडरस्टूड प्लीज मेंशन दैट, कितने बच्चों को समझ में आ गई है? I want everyone to respond over it. All right. चलिए लास्ट केस देखिए गौर से। बल्कि मैं एक मतलब पहले ये केस दोबारा से करता हूँ। Cr2O7 2 माइनस। शायान साहब अनम्यूट कीजिए अपने आप को। यस सर। ओके, तो चार्ज इज 2 माइनस, इसको उठा के आपने दूर रख दिया, दैट मीन्स यू आर ट्रीटिंग दिस एज अ कंपाउंड, राइट? इट्स नॉट एन आयन एनीमोर। यस सर। नाउ लेट्स मूव ऑन। क्रोमियम इज इन फोर्थ पीरियड एंड ऑक्सीजन इज इन सेकेंड पीरियड, तो ऊपर कौन हुआ है? ऑक्सीजन हुआ है ना। यस। ऑक्सीजन को रियल ऑक्सीडेशन स्टेट दे देनी चाहिए। क्या होती है ऑक्सीजन की रियल ऑक्सीडेशन स्टेट? -2 2 minus. How many oxygens are there? 7. This becomes 14 minus, ओके। right? So if this is 14 minus, I don't know about chromium, so this should be 14 plus. So first, what overall charge this has? 2 minus. माइनस। So this becomes 12 plus. यस। How many chromium are there? So this becomes 6 plus per atom chromium. Is that making sense to those who were saying that this was difficult? क्लियर। Everyone, those who haven't responded yet. चलिए आगे चलते हैं। अब मैं कुछ और आयंस दे रहा हूँ। सर ClO वाला कराएं? ना कराता हूँ तो कौन सा? आयशा जरा देखो गौर से। ClO3 1 minus. So take this away from this. So this remains 1 minus. This is acting like a compound. Chlorine is in third period, oxygen is in second period. So this becomes, oxygen gets its real oxidation state, 2 minus. So how many oxygen are there? 3. So this becomes 6 minus. So if oxygen is 6 minus, the chlorine will be 6 plus. What's the charge on overall polyatomic ion? Minus it.
So this remains 5 plus 2 minus, so Cl 5 plus O. Is that thing clear beta? सर क्लोरीन राइट पर है ना? क्लोरीन राइट पर है तो उसका रियल चार्ज होगा ना? नहीं बेटा, राइट पे तो है। पीरियड देखो, सबसे पहली प्रायोरिटी क्या है? हाइट देखनी है। अच्छा ठीक है, मैंने ऐसे ही कराया था, सिर्फ कंफर्म करना था। ठीक है, लेकिन याद रखो पहले हाइट देखेंगे कि कौन ऊपर है। नहीं शरीफ, क्या क्वेश्चन है? आप वैसे टाइप कीजिए। तुम्हें बहुत शौक है माइक में बोलने का शरीफ। नाउ आई एम गिविंग यू फ्यू मोर। Number 1 will be SO3 2 minus PO3 2 minus, oh sorry, 3 minus. Next, number 2, number 3, BrO4 1 minus. जी बेटा। इसके बाद नंबर 4 और कौन सा है जो पेपर में है? NO3 1 minus, NO2 1 minus, और मेरे पास एक और आयन था, MnO4 2 माइनस। हमारे पास MnO4 के दो आयन है, MnO4 1 माइनस, MnO4 2 माइनस। बेटा you should know that you have a data booklet. See in which group is it, in which period is it. शायान, इतनी आसानियों के लिए नहीं डिमांड किया करो कि सारी चीज़ें मैं ही बता दूं। तुम्हारा भी काम है काम करना। Why are you doing so much bad today, शायान? साथ समझ, why your hand is raised? थक जाओगे, हाथ नीचे करो। साद अख्तर, is this thing clear बेटा? इन 6 के 6 केसेस के जल्दी से आंसर कीजिए। May Allah help you to have a very good day. शाबाश अब्दुल्ला मंजूर मलिक, all correct. शाबाश सुभाना, all correct. आशा you deleted your answer. अच्छा वो गलती होगी शायद।
शाबाश दुआ. I just got two answers, three answer now. शाबाश आयशा जर्जीस. शाबाश अब्दुल्ला मंजूर मलिक. गुड वर्क. हाँ बेटा. शहीर बिया 7+ लिखिए. NO में NO2 में N3+ और NO3 में N5+ मेंशन कीजिए इस बात को. ठीक है तो एग्जैक्टली वही तरीका है बेटा. जल्दी से करो. आई एम सेंडिंग यू अनदर मीटिंग लिंक. एटलीस्ट कॉपी कर लीजिए ताकि मैं आपको दूसरा मीटिंग लिंक भेजूं. क्वेश्चंस कॉपी कर लीजिए. Sending you another link so that you can join quickly. See you in 3 minutes.